हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अ, कुछ मीठी बातें इस चैट शो को लेकर आज फिर हाजिर हुई हूँ। अनिल कैंसर क्लिनिक और मैत्री परिवार की तरफ से हम ये चैट शो हर महीने एक सुपर हीरो को लेके करते हैं। तो आज फिर एक सुपर हीरो को लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की हमारी सुपर हीरो है ज्योत्सना टंकसाले। ज्योत्सना, वेलकम टू द शो। सभी को मेरा प्रणाम and thank you for giving me this opportunity to be here as a part of our show. अरे माय प्लेजर ज्योत्सना, माय प्लेजर। तो ज्योत्सना एक वर्किंग Yes. प्रोफेशनल है, ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करती है। बाकी तो फिर अब ज्योत्सना से ही जानते हैं। ज्योत्सना, चलो शुरुआत करते हैं। कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, बताओ। Yeah, sure. Uh, Pandemic seems to be looks like to be getting over. Life is getting back to normal. Uh, we for the past 2 years हम लोग सब न्यू नॉर्मल में एडजस्ट हुए थे. अभी ऑफिसेस घर से ही शुरू थी. नाउ मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस चालू हो गए हैं एंड इवन वी हैव स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस एंड वर्किंग फ्रॉम ऑफिस नाउ. दो नॉट 100%, लेकिन अभी चालू हुआ है. सो आई एम रियली फीलिंग वेरी नाइस गोइंग बैक टू ऑफिस, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हो रहा था ना कि घर में काम करने का थोड़ा मोनोटोनस लग रहा था. वही एटमॉस्फेयर में और थोड़ा सोशल क्रेविंग होने लगा था, फ्रेंड्स को मिलने का लग रहा था, थोड़ा कुछ एक्टिव महसूस और हो. सो यस, आई एम एंजॉयिंग नाउ गोइंग बैक टू ऑफिस. ग्रेट, एक्टिव महसूस हो, ये लाइन से मैं आइडेंटिफाई करती हूँ क्योंकि मैं ज्योत्सना को हमेशा एक्टिव ही देखती आई हूँ। आई आई रिलेट टू हर एक्टिवनेस। इसलिए ज्योत्सना सच में ये बात तो मैं मानती हूँ। थैंक्स ज्योत्सना की प्रीति. और मेरी मुलाकात, ज्योत्सना हम एक दूसरे को 4-5 साल से जानते हैं। यस. और या. जिस प्लेटफॉर्म के कारण हम जुड़े या मिले हैं, वो है मैत्री परिवार, जो कि डॉक्टर अनिल हिरूर का एक कैंसर सर्वाइवर सपोर्ट ग्रुप है। इस प्लेटफॉर्म पे हम मिले हैं, साथ मिलके हमने काफी काम किया है। ज्योत्सना इज अ वेरी डेडिकेटेड मेंबर, एक्टिव मेंबर इस ग्रुप की। ज्योत्सना, आज मैं हम मिले हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, उससे उसके बाद की ज्योत्सना को तो मैं जानती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा उसके पहले की ज्योत्सना को जानना चाहूंगी कि कैसी है वो ज्योत्सना, कैसी थी वो ज्योत्सना जिस प्लेटफॉर्म पे हम मिले। उसके पहले किस दौर से गुजरी है ज्योत्सना, अगर थोड़ा सा शेयर करोगी तो अच्छा लगेगा हमको। डेफिनेटली, आई वुड बी ग्लैड. फ्रैंकली स्पीकिंग, बताऊं तो ये जो एपिसोड हुआ है 2014 के पहले, uh, बिल्कुल नॉर्मल ऑफिस जाना, घर का काम, एक यूजुअल रूटीन रूटीन सी लाइफ चल रही थी. आई वाज मोर इनटू माय जॉब. In 2013, I just got an opportunity to the next level of being a team leader, and I was enjoying that role. uh, all in all, taking care of my mom. We both were live together, so we enjoy moments. So a lot different than what I am now, what my life is now. So thodi shansi, I was not a very extrovert or not uh, that social what I am now. So changes तो बहुत आए हैं. uh, बात की बात करूं तो I have become more humble, more patient. I've started enjoying that happiness in small moments, cherishing that happiness. This is something I feel that that has come from within on its own uh, after 2014, and I have evolved in a totally different person altogether. ये मैं पहले नहीं थी. तो ज्योत्सना, 2014 में ऐसी जो घटना घटी है जिसने अकॉर्डिंग टू यू हैज
changed you as a person, उस घटना के बारे में बात करना चाहोगी? हमको थोड़ा सा Why हमसे not? शेयर कर। Yes, absolutely. या Yeah, सो sure, Preeti. So, uh, like I said, I was in 2013. I became a team leader. I was enjoying my role. Uh, I had that habit of walking in the morning, but then suddenly, like I was seeing that my weight was dropping, but I was not knowing the reason. I was getting happy. Wow, with walking, I'm reducing so much of weight, and things went on. But at the same time, I was taking treatment for the benign fibroids also, and I was taking ayurvedic treatment. And then there was one such lump जो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज समथिंग डिफरेंट और उसका टेस्ट होना चाहिए. सो आई वॉज आफ्टर डॉक्टर कि नहीं, मुझे आप रेफर करो गायनेक से या किसी और से, so that I can go ahead and we can investigate that. And after that, the tests were positive, and then we it got revealed that yes, it is I'm positive for breast cancer. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, और हम लोगों को जियोलॉजी में एक सब्जेक्ट था जिसमें फीमेल ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन या सिलेबस था, during which I got to know, I had some information regarding the lumps or the tumors, what are the types which are benign and what could be cancerous, or so मुझे थोड़ा idea था, and that I think that made my life easier, or that made things easier for me, rather than pushing things. Could be done on time, detection could be done on time is what I feel. यस। और ज्योत्सना, जैसे कि तुम तो जानती हो, हमारा मैत्री परिवार जहाँ कहीं भी अवेयरनेस के लिए जाता है, हमारा सिर्फ हमारी एक निवेदन होता है लोगों से कि अर्ली डिटेक्शन इज द की। अगर आपने Hmm. डिटेक्ट जल्दी हो गया आपका कोई भी ट्यूमर, तो आगे की जर्नी बहुत पॉजिटिव और स्मूथ होती है। सो Correct, correct. तो तुम्हारा 2014 में 14. ब्रेस्ट कैंसर का लंप डिटेक्ट हुआ। ओके। तो Yeah, yeah. ट्रीटमेंट लेने के बाद इमिडिएटली बैक टू वर्क हो गई तुम, कि कैसा रहा ट्रीटमेंट लेने के बाद? एनी कॉम्प्लिकेशंस एज सच कुछ फेस करना पड़ा? ट्रीटमेंट मेरा रहा था अराउंड 16 chemos and 31 radiations, so it went for around 8 months. लेकिन I'm really fortunate to be a part of ATPI. It is the company which I'm working for. They were so considerate. They gave me work from home facility, and during the entire course of my treatment, I made sure I work from home. And once the entire treatment after the radiations was over in 2015, I was back to office. So गुड गुड, ग्रेट। that was a great support which I got from ATPI. So I'm always thankful to my company. ये होता है ज्योत्सना, सीरियसली नाउ एज यू मेंशन, हम रियलाइज ये तब करते हैं जब कोई परेशानी या कोई डिफिकल्टी या कोई चैलेंज लाइफ में आती है, कि Hmm. वी आर सो ब्लेस्ड विद गुड पीपल इन आवर लाइव्स। ये मैंने हमेशा देखा है। तो और Yeah, yeah. भी जैसे तुमने बताया, पहले की ज्योत्सना इंट्रोवर्ट, एंड यू से यू हैव बिकम हम्बल। आई हैव ऑलवेज फाउंड यू हम्बल, Absolutely. लेकिन हाँ, Yes. सो इन हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस हम्बलनेस? ये कैसे, यानी कि क्या चेंज आया? Uh, humble in the sense, when I'm looking at somebody who is in a similar situation like what I was, not only this situation, like previously, I want to accept in my professional career as a team leader, I was a bit strict towards my team, but later on its own, I became more courteous. Not, I would not say courteous. I became more understanding. I became more empathetic, I could say, Yes, and I empathy, became right? more accommodating. I started accommodating people more than being rigid or stringent. So that is one of the biggest positive point or a positive change what I have seen in myself. I became more patient also. Yeah,
You see, this is such a big quality, Jyotsna. Accepting that we had a few shortcomings prior, and अब हम, you mean to say, in some way we have become a better person तुम्हारे इस चैलेंज ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट एंड चैलेंज के बाद, या you were always a very good person, now you have become the best, बोल सकते हैं. Thanks, ज्योत्सना, thanks for मेरे को ये बताओ ना, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड यू आर वेरी कमिटेड. मैं जानती हूँ तुम्हें 4-5 साल से, एंड आई नो यू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स. तो अपने लिए टाइम निकाल पाती हो? क्या करती हो अपने लिए? जब टाइम निकालती हो तब क्या करती हो? Okay, very nice question, Preeti. I said that there are a lot of changes. So उसमें से एक बहुत बड़ा change है कि I have become more disciplined and I have started using my time more effectively. So one nice example I would like to narrate here during pandemic around I think 2020. I underwent one course called Magnificent Mornings, which was a 1 week course early in the morning at 5 o'clock. अच्छा. And the course content was so nice and which I have never participated in any such program where she taught us on how you can um, make yourself disciplined, how you can plan your goals, how you can divide your entire day into different activities that your brain cannot concentrate more than 30 minutes. So these were some of the things that were covered in that course, you know. And thereafter, things have changed for me. So like if I have to say कि मैं सुबह उठती हूँ, I make sure I go for a walk at least 5,000 steps, minimum 5,000 steps is what my target is. If I do not go for a walk, I'll do a 1 hour workout at home. And I have done a lot of studies on calorie burning, different kind of exercises for your body toning, cardio, abs, etc. So I also keep a track of how many calories are burnt. So morning session, yes, I dedicate towards my fitness. Uh, then I have also started concentrating on my diet. I have taken some advices from the nutritionists and dietitians who are doctors themselves. So based on that, I prepare my tiffins. I make sure I don't eat outside, and if I eat, then it is once in a blue moon. So I prepare my tiffin, go to office. So this traveling time that I have of 30 minutes, I do read books. So I have a library and make sure I carry my books and use that travel time into reading to and fro. And then 12:30 to 9 is my office, and I reach home around 10:15. And then it's just me time at night, just watch some TV serials and then sleep at 11:30. So yes, ये तो things have changed, and I'm so happy that I'm using my time effectively and constructively. So I'm happy about या नो डाउट, नो डाउट. और ये तो हो गई हमारी प्रोफेशनल ज्योत्सना, एज आई नो हर, पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, अबाउट हर डाइट, अबाउट हर एक्सरसाइज, अबाउट हर वर्क, अबाउट हर ड्यूटीज. मैं जो जानना चाहती हूँ वो ये है कि हॉबीज क्या हैं ज्योत्सना की, जो, क्योंकि मैं, थोड़ा बहुत अंदाज है मेरे को कि हम इस एक्सटीरियर के पीछे एक बहुत ही क्रिएटिव ज्योत्सना है. थोड़ी सी झलक देखी है मैंने. तो मैं it. थोड़ा ये जानना चाहूंगी कि हॉबीज क्या है ज्योत्सना, जब भी टाइम मिलता है. आई नो अभी ये पैंडेमिक के बाद तो तुम लोगों का काम इतना जोर शोर से शुरू हो गया है, द ट्रैवल इंडस्ट्री इज बूमिंग. फिर भी जब भी टाइम मिलता है, या आई वुड पुट इट दिस वे ज्योत्सना, ऐसी क्या चीज है जो इस 2014 के मोड़ के पहले तुम करती थी, छूट गई, जिसका तुमने अभी फिर हाथ पकड़ लिया? ऐसी भी कोई चीज हो तो हम सब जानना चाहेंगे.
अभी ये दौर से गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि हम हमारे हाथ से जो जो चीजें छूटी हुई है या which we wanted to do before, let's catch it up. Why not now? We have still a lot of time. So Kathak was my passion. When I was in the school, I was learning Kathak. I gave 2 exams also. But then with the science stream coming in, I had to leave it. And then a lot of other responsibilities came in, and I really could not pursue my Kathak dance class. So this was the time when I thought, yes, I have to go back. And I would like to admit here, my biggest inspiration was Sandhya Tai. She made sure that I go and join it. And yes, from last June, I have started pursuing and learning my Kathak again. Though I have taken a month's break due to some of the personal responsibilities, but in the June I will be back to my class again. And I'm really, really so happy to be back. Uh, uh, Tuesday and Wednesday mornings, I have that class. So I go to my class, and then from there I directly go to the office. So I make sure that I can do it. सबको बताना So चाहूंगी कि yeah. ज्योत्सना, हमारे पिछले साल वेबिनार्स होते थे कोविड के समय, बिकॉज वी कुडंट हैव फिजिकल मीटिंग. वी यूज टू हैव आवर वेबिनार्स वेयर यूज टू इनवाइट prominent डॉक्टर्स टू स्पीक ऑन अ सब्जेक्ट. तो उन वेबिनार्स, उनमें से एक वेबिनार में ज्योत्सना का हमने एक बहुत ही सुंदर कथक परफॉर्मेंस देखा है. एंड इट वाज अ रेवलेशन फॉर ऑल ऑफ अस, ज्योत्सना, कि तुम इतना सुंदर कथक, एक्सप्रेशंस लाजवाब. और ये जान के मुझे आज आश्चर्य हो रहा है कि तुम कह रही हो कि तुमने छोड़ दिया था कथक एंड अब फिर से शुरू किया है. फॉर एवरीवन, संध्या ताई हमारी बहुत ही एक्टिव सर्वाइवर हैं एंड वी आर ऑल इंस्पायर्ड बाय हर, नो डाउट. तो ज्योत्सना, कथक कथक तो तुमने बता दिया उसके बारे में, हमने तुम्हारा एक परफॉर्मेंस भी देखा है एंड यू आर फैबुलस. कथक के अलावा मैंने कई बार तुम्हें कुछ ना कुछ गुनगुनाते हुए सुना है. तो इस सिंगिंग ऑल्सो वन ऑफ योर क्योंकि सुना है बहुत सुंदर गाती हो, बहुत सुर में गाती हो. Not really, Preeti. It's so kind of you to say that I am a good singer, but yes, गाना तो बहुत अच्छा लगता है, especially when on the YouTube there are songs running in the background. Then I like to sing. But yes, apart from singing, yes, I like to drive also. I have Celerio, which I had gifted to my mom, ओहो. and yes, so I like to drive also. Though I have not done very long drives till 4 hours in a stretch. Till that I have done my drives, but जो I think I am still to get there. But yes, I यू आर enjoy. गर्ल, यू आर ऑलरेडी देयर. 4 आवर्स ड्राइव आजकल करने में लोग बहुत कतराते हैं कि अरे नहीं नहीं. एंड टेल मी समथिंग, इज ड्राइविंग समथिंग विच यू यूज्ड टू डू अर्लियर, या तुमने रिसेंटली हैव टेकन इट अप, सीखा है? यू हैव ऑलवेज बीन ड्राइविंग? नहीं, मैं पहले स्कूटी चलाती थी सिंस 2011. I had my scooty and I did my driving license, dual driving license, for car as well as a two-wheeler, but I never drove a car. That was in 2011. But in 2016 अचानक से मुझे लगा कि नहीं, मुझे मम्मी को गिफ्ट करना है. Why I cannot dare? Why cannot I do it? Something what she wishes. That's for her, and that's how I planned. I did my course again, and with a lot of planning, I made sure I get a car for her, and then that is how I started driving. ग्रेट, ग्रेट. सो वही मैं सी आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, कि कई चीजें, you are doing so many newer things after you went through that tough phase in your life. Yes, You took up yes, kathak again, you bought a car, you learned driving again. You drive beautifully, I have seen you drive, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं. So ज्योत्सना, क्या ऐसा लगता है कि इसी तरीके का चैलेंज नहीं, लेकिन हर इंसान की लाइफ में
कोई ना कोई जब तक चैलेंज नहीं आता, हम लाइफ के बारे में इतना ज्यादा सीख नहीं पाते हैं. इफ एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, so do you think challenges make us a better person? Preeti, I agree you 101%, because जैसे कि you have also undergone, I have also undergone, जब कैंसर से हम लोगों ने स्ट्रगल कर लिया है, तो लाइफ में ऐसी इससे कठिन और क्या बात हो सकती है, इज व्हाट आई थिंक, कि अगर वो हम लोग फाइट कर सकते हैं, देयर कुड बी एनी अदर चैलेंज व्हिच वी कैन फाइट. And secondly, we start looking at the situation in a different perspective. I have started looking everything positive even in a challenging situation. See, Right. this is what each one of us, when we go through the challenges, we become tougher. We we are much stronger than what we think we are. तो जब तक हम लोग वो सिचुएशन में नहीं जाते हैं, we don't know what we are, and we then evolve into a new person. We start looking things from a different angle altogether. एक स्मॉल एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी कि व्हेन आई वाज डिटेक्टेड और व्हेन आई वाज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कैंसर, मैं ऑफिस में मेरे हेड को बता रही थी कि मुझे ऐसे ऐसे डिटेक्ट हुआ है, एंड आई वाज क्राइंग. तो ही सेड, डियर यू बी पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा कैंसर डिटेक्ट हुआ है जो क्यूरेबल है. सो सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट क्लिक टू मी, अरे इसमें भी पॉजिटिव देखा है इन्होंने, एंड ही गेव मी दैट डायरेक्शन कि डोंट लूज योर होप्स. तो इतने कैंसर्स में से तुझे यही कैंसर हुआ है जो क्यूरेबल है. So from that time, I started looking at things from a different point of view, from looking something positive. So you know that we lose hair in chemotherapy. तभी मैंने डॉक्टर को बोल रही थी कि मुझे मेरे बाल नहीं जाने चाहिए, ऐसा कुछ करो आप, मुझे बाकी कोई भी ट्रीटमेंट हो लेकिन बाल नहीं आने चाहिए. But then he said your hairs are reversible. And when I actually became bald, I was thinking, wow, I'm looking so nice even when I'm bald. And now, as you know, after the treatment is over, I got curly hairs, which I always wanted. So things always change, and they've changed for good. So I was happy to see myself in curly hairs, which I always wanted. So a lot of learnings, in this situation, also learned a lot of things. Yes, so nicely said, Jyotsna. A lot of learnings. Yes, we have learned a lot. और अगर गोल्स के बारे में तो क्या बात करूं. यू हैव अचीव्ड सच सो मच इन लाइफ, एंड यू विल अचीव लॉट मोर. लेकिन कुछ आगे की लाइफ के बारे में क्या लगता है? कुछ कुछ गोल है, और कुछ कुछ आगे कहीं कहाँ जाना है? क्या सोचा है लाइफ के बारे में? सी, मैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कर रही हूँ, क्योंकि हम बोलते हैं कि वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, लेकिन अगर कुछ ज्योत्सना के मन के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए जानना चाहती हूँ. यस, डेफिनेटली प्रोफेशनली अगर मैं बात करना चाहूँ तो यस, मुझे और भी ग्रो होना है. राइट नाउ आई एम at a managerial level, but definitely I always look for upgrading myself, learning things and make sure that I don't stagnate myself. तो वो एक तो है ही. आई ट्राई टू डू सेल्फ लर्निंग. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का करने का भी मेरा एक प्लान है. आई एम जस्ट प्लानिंग ऑन दैट कि कभी करना है और कैसे करना है, कहाँ से करना है. So that is on my plans. And secondly, I always wanted to have a house of my own. ओके. So I've booked a house for myself, and I'm looking forward to get it. I'll be getting it after 2 years. So looking forward to go कॉन्ग्रेचुलेशन. and live in my dream house. ओह, गॉड Thank you. ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू, सच में. Oh, अच्छा, thank you. ज्योत्सना, हम लोग जब मिलते हैं तो आई हैव सीन यू वेयर एक्सोटिक ज्वेलरी. अब कई बार हम लोग पूछते हैं, ज्योत्सना, ये
इसका थोड़ा राज बताओ ना यार, कभी बताती नहीं हो, अब आज इतने लोग हमें देख रहे हैं तो let people, let people know something about the jewelry you wear. You have very good taste in jewelry. तो कुछ कहीं खास कहीं से लाती हो, क्या करती हो? Yes, I do shopping. डोंबिवली में तो बहुत सारा शॉपिंग है, but apart from that, my sister also makes jewelry, and अच्छा। whenever she is here, she tries to teach me how to make jewelry. But most of the ओके। exotic stuff of jewelry what I have just bought it from her. She keeps on giving me, and I have that many varieties I have. But yes, I love cloth. I love jewelry. I love shoes and sandals. So it's a typical girly things what we like, and so jewelry is from my sister. ओके ओके, सो कहीं ना कहीं कुछ तो तुमने भी शायद सीखा है अपनी सिस्टर से, तभी यू हैव सच ग्रेट टेस्ट। आई थिंक तुम भी कुछ बना लेती हो, छोटा मोटा तो बना लेती हो। यू आर Yes, बीइंग I did अगेन make make yes. yes, उसके साथ मैंने कुछ बनाए थे सेट्स। अभी बहुत दिन में नहीं बनाए हैं, बट whenever she makes, I do help her, or I try to make one or two. But yes, little bit, not as expertise as her. अरे एक्सपर्टीज की क्या बात है, वी हैव ज्योत्सना विद अस, हु इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, हु इज अ ग्रेट लीडर, आई नो दिस फॉर श्योर। बहुत अच्छी लीडर है ज्योत्सना, क्रिएटिव है, कथक बहुत सुंदर करती है, गाना बहुत अच्छा गाती है, और आज पता चला कि ज्वेलरी भी थोड़ी बहुत बना ही लेती है। तभी सच अ क्रिएटिव साइड टू द टफ ज्योत्सना दैट आई डू। ज्योत्सना, जैसा कि हम साथ में जब काम करते हैं अवेयरनेस के लिए, तो एज अ सर्वाइवर क्या लगता है, व्हाट मैसेज वुड यू वांट टू पुट अक्रॉस? आज कैंसर का इंसिडेंस लेडीज में इतना, विमेन में इतना बढ़ गया है। आई कैन से कि हर फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में एक कैंसर पेशेंट या सर्वाइवर है, इरेस्पेक्टिव ऑफ विच ऑर्गन, लेकिन है। और बहुत कठिनाई से गुजरते हुए लोग हमने देखे हैं। तुम इंस्पायर कर सकती हो, मोटिवेट कर सकती हो लोगों को, तो तुम क्या कहना चाहोगी for all the patients who are going through this and all the survivors also? Okay, basically, my biggest message for today is for women. Okay, it's okay not to be called a superwoman all the time. Okay, because women keeps on switching on and off between her activities the whole day, between office, home, etc. Somewhere down the line, she puts her health on a back seat. So if you have traveled by a plane, हमेशा वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जाती है, फर्स्ट यू सिक्योर योर ओन मास्क so that you can help others survive. So this is very apt in our normal lives also. Okay, make your children independent, make your husband independent, make your family independent, so that you get some serene time for yourself, for your health. अक्सर देखा जाता है कि कुछ ना कुछ होता है तबीयत का, बट दे से नहीं ये अपने आप ठीक हो जाएगा, आई डोंट वांट टू गो टू द डॉक्टर, फिर वो टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे, देन कुछ नेगेटिव आया, कुछ प्रॉब्लम आया तो क्या करेंगे? विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड दे आर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। एंड एज यू नो, जब जब भी कोई लेडी घर की बीमार पड़ जाती है, द एंटायर हाउस गोज इन अ मेस, कितना डिफिकल्ट हो जाता है। So this is my only message ki try to keep yourself some time in priority, and not your health, not to compromise on your health at any time. So this is the biggest message I want to give. And for everyone, the slogan which I strongly believe is nothing lasts forever. So if you are in a difficult time now, you're definitely come out of it and you will have some good times also. So always believe.
Nothing So lasts well said. forever. So well said. Nothing lasts forever. Uh, Jyotsna, बहुत ही सिंपल वे में एंड इन एन अनएज्यूमिंग वे यू हैव पुट अक्रॉस सच अ ब्यूटीफुल मैसेज टू एवरीवन आउट देयर. आज हम सिर्फ कैंसर सर्वाइवर्स या पेशेंट्स की बात नहीं, ये बात हर एक पे लागू होती है कि डोंट गिव अप, नथिंग लास्ट फॉर एवर. टफ टाइम्स आए हैं तो जाएंगे भी. ब्यूटीफुल मैसेज ज्योत्सना, ब्यूटीफुल मैसेज. एंड ज्योत्सना, चाहूँ तो मैं दिन भर तुमसे बात कर सकती हूँ आज. इट्स बहुत अच्छा लग रहा है बात करके तुमसे, बिकॉज आज मैं वो साइड देख रही हूँ ज्योत्सना की जो यूजुअली हम बस काम के लिए मिलते हैं, वो काम करते हैं और निकल जाते हैं. ये दिस साइड ऑफ ज्योत्सना, दिस इमोशनल एंड सेंसिटिव साइड ऑफ ज्योत्सना से मिलके आज मुझे बहुत अच्छा लगा. और आई एम श्योर कि हम हमें देखने वाले आज जितने लोग हैं और हमें आज जितने लोग सुन रहे हैं, उन्हें ये बात कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्प करेगी. तुम्हारे जो स्लोगन्स हैं, डोंट गिव अप, टफ टाइम्स डोंट लास्ट. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू ज्योत्सना. Same here, थैंक यू फॉर Preeti. टेकिंग Before आउट. we end, if you can give me an opportunity, I want to take this platform to express my gratitude to everyone who has supported me, who has lifted me up in my journey. My close knit family, my mom, my sisters, my brother-in-law, my cousins, my entire ATPI family. So. I'm really thankful to each and every one of them, and I'm so blessed and fortunate that all these positive people were around me, and because of them, I think today's interview was I can dedicate to them, to all of them. Thank you, everyone. थैंक यू ज्योत्सना. दोस्तों, आज मैत्री परिवार और अनिल कैंसर क्लिनिक की तरफ से हम आपके सामने ज्योत्सना टंकसाले को लेके आए हैं, जिनकी बातों से आप कभी भी अगर जिंदगी में लो फेज में हो या लो फील कर रहे हो तो इनकी बातें याद करके आप अपने आप को मोटिवेट जरूर करेंगे. शी इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ अ फाइटर हु डिड नॉट गिव अप एंड आज अपना ड्रीम होम का पोजीशन लेने की राह देख रही है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. दोस्तों, आप लोगों को थैंक करने के लिए थैंक करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारी कुछ मीठी बातों को इतना प्यार दे रहे हैं, और इसी तरह बस साथ बनाए रखिए. अगले महीने फिर हाजिर होंगे एक सुपर हीरो सर्वाइवर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. कुछ मीठी बातों से अब नमस्कार. थैंक यू ज्योत्सना. Thank you.